Good afternoon. I'm Dr. Gaurav Mandhan from Miracles Apollo Cradle Hospital, Sector 14, Gurugram. I'm Director and Consultant Neonatology and Pediatrics and heading a department. फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की जो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते रहते हैं. दे कीप ऑन आस्किंग अबाउट थंब सकिंग और यू कैन कॉल इट एज अ फिंगर सकिंग. कुछ बच्चे थंब सक करते हैं, कुछ बच्चे फिंगर सक करते हैं, बट बोथ ऑफ देम दे इंडिकेट द सेम थिंग. सो पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज थंब सकिंग एंड व्हाई दिस किड्स डू दैट. बिकॉज कभी कभी न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स हमें आके बोलते हैं कि बच्चा हमारा जो है वो अभी से थंब सक करना शुरू कर गया. So we should understand that there are different phases of the child's development during which this problem can occur. Almost nearly, if you think 90% of the kids, they do this thumb sucking or finger sucking during some part of their life. तो ये बहुत ही कॉमन इशू है एंड द मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इट इज़ नॉर्मल एंड रिजॉल्व्स बाय इटसेल्फ. तो अगर हम बात करें न्यूबॉर्न पीरियड की, तो जिस न्यूबॉर्न बच्चे जो हैं अपने ब्रेन में इनके एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स होता है, इसको सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं. So this sucking reflex, is a necessity these newborn babies have, and they need something in their mouth to suck upon. तो इसलिए कभी कभी the mother is away and if they don't get anything, they just start sucking their own, thumb or any finger. So this happens to sucking reflex. This is very very normal, very very normal. और ये सकिंग रिफ्लेक्स जो है ये टिपिकली डिसअपियर हो जाता है अराउंड मे बी बाय 2 months ऑफ एज और मे बाय 2.5 months ऑफ एज. यहाँ पे वो सकिंग जो है इनकी खत्म हो जाती है बच्चों की. द सेकेंड फेज ऑफ थंब सकिंग कैन अपीयर ड्यूरिंग द माउथिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट. एक माउथिंग एक फेज ऑफ डेवलपमेंट होता है जिसमें बच्चे हर चीज वट एवर इज देयर दे पुट इन देयर माउथ. इफ दे डोंट गेट एनीथिंग दे जस्ट स्टार्ट पुटिंग देयर थंब और फिंगर इनटू देयर माउथ. तो ये भी एक फेज ऑफ डेवलपमेंट है विच इज आल्सो वेरी वेरी नॉर्मल. So if I talk about when this will disappear, this will disappear typically in some kids maybe by 7-8 months of age or by 2 to 4 years. 2 साल से 4 साल में majority of the kids they will leave this habit spontaneously actually. लेकिन कभी कभी ये habits जो है और लंबी तक खींच सकती है 5 साल तक. So, when we should worry, that is the most important question. When we should worry, when the child is not able to leave it completely and is completely dependent upon, thumb sucking to become pacified. That is the time we should be worried. And what are the complications of this? So complications is majority of the kids they do develop some dental problems because of this thumb sucking. They might have an anterior thumb bite. And the incisors, the teeth, the malocclusion of the teeth might happen actually. So sometimes if you feel there could be also some features of palate problem. So palate might become a high arched actually because of persistent thumb sucking, and the thumb or fingers whatever the child is sucking उनकी स्किन भी खराब होनी शुरू हो जाती है वहां से. So these are some complications. In case any of these complications are there, we should be consulting a doctor immediately. And sometimes the kids with a malocclusion might need a dentist referral immediately for improving the dentition of the child. So now the next majority of the questions that kids ask us, that the parents ask us कि हमें क्या करना है. तो most important thing is है diversion, the child's diversion, mind diversion at the time when they are sucking. If you immediately divert their mind to something else or to their attention to something else, the kids usually is very easy for them, they just forget it and they keep on playing with something else. Second thing is positive reinforcement. एक होती है negative reinforcement. Many kids पेरेंट्स कैसे सिर्फ फिंगर पे कुछ नमक लगा देते हैं, मिर्ची लगा देते हैं ताकि ये करे ना, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है उसमें बच्चे को कोई भी छोटा सा रिवार्ड दे दिया जाए अगर वो थंब ना सक करे. दिस happens in even more positive. Majority of the kids with a positive reinforcement, positive support, they will be able to come out of this behavior very easily as compared to the negative reinforcement. कभी भी बच्चे को डांटेंगे नहीं अगर वो अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा है.
this problem can be solved with even more compassion or more love as compared to, और कोई भी पॉजिटिव रिवार्ड आप बच्चे को डेली दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। जब बच्चा एक पर्टिकुलरली थंब पे अटक जाता है तो यू कैन डाइवर्ट देयर attention to something else. And in case still you are facing a problem, you feel free to connect with us. Actually, we will be helping. We can help you out in case the child is still having such problems. Actually, thank you, friends. And in case you have any problems, you can please put your question in the chat box, and you can also connect with us. You can come to me. I have a daily OPD at Miracles Apollo Cradle Sector 14. और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कनेक्ट टू अस विद अ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आल्सो। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून।